Hello, hello. Assalamualaikum everyone. I hope you had a good time at the exercise. And today we will be going through interpreting graphs and data and also a bit about expenditure data. It's going to be an interactive session and I'm looking forward to participation from all of you. Just a second. तो आपको एक ही जस्ट अ सेकंड मैंने दो भेजी थी ना नहीं नहीं दो पीपीटीज है ना दूसरी कौन सी दूसरी डिस्प्ले हाँ हाँ कौन सी वाली है जरा इसको नीचे करें नहीं जो दूसरी वाली है जो अभी निकाली थी सेकंड की मैंने दूसरी करनी है माहिन माहिन उनके पास वो एक्सपेंडिचर वाली छोटी सी पीपीटी है वो मैं आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरप्रेटिंग डेटा ना वो वाली उनके पास जो आपने कोई पीपीटी वो दो थी ना हाँ दोनों मैंने भेजी हैं आपको दोनों ही मैं जो दिखाई नहीं नहीं एक कवरेज है उनके पास ना जो मैंने आपको भेजी थी वो तो इंटरप्रेटिंग कौन सा दिखाएं आपके पास एक मैडम ने कवरेज वाली भेजी एक ही है वो एक ही है डेटा मेरे पास जो आपकी तरफ चाहिए वो डेटा एक्सट्रैक्शन वाली है और एक एक्सपेंडिचर वाली है हाँ तो डेटा एक्सट्रैक्शन वाली है तो ये प्ले करनी है डेटा एक्सट्रैक्शन अच्छा ठीक ठीक ओके Okay, so today I'm going to sensitize you that how do you actually look at data and how you interpret data and how deceiving data can be if you are not looking at from different angles and what ability it has to hide certain aspects and to reveal certain aspects. And I'm going to start this by giving you a classic example of how data can be deceiving. This example is used by Howard Kennedy School as a classic example of a difference between data and evidence and why do we need to integrate evidence at all step of our data. So this is the largest financial inclusion program by our neighboring country, which is called Pradhan Mantri Janman Yojana. And it was launched in 2014 with goals to universal access to facilities, and some 18 million account opened up in first week and 328 million accounts opened till date. So a success story from the very start. And this is the advertisement that they used. And the target was that every household in our neighboring country must have an account ownership. And there were multiple financial services that were associated with these account. So there was an aim for universal access in the country.
And then just that there was a realization in 2019 that 46% of the accounts had zero balance, and which signified that access does not mean usage. But all was not lost. And right after that, their finance minister announced that zero balance accounts have come down to 20% from 77%. Again, a huge achievement in making some active accounts out of dormant accounts. But this was what was happening. So if you can see this picture, these are the account passbooks lying at one of the branches in one of their provinces, where the bank's officials were putting a token amount in dormant accounts of rupee 1. And they were actually, due to pressure from authorities to reduce the percentage of zero balance account, they were actually putting just 1 rupee and making a dormant account an active account. So if you look at the data, the very first slide I showed you, 328 million account opened up just in 1 year, a huge success story, legitimate accounts under the central bank authority. So this is a legit data. Nobody can question this data, because in terms of financial inclusion, the very definition of financial inclusion is ownership of a formal banking account. And dormancy is never perpetual. You can always give application after 5 months, 6 months, or certain period of time and request that I want to actually activate my account and I want to make my account in dormant. So if this data is projected by the central bank of our neighboring countries, nobody can challenge it. But what is the hard evidence on ground? That despite provision of financial services, despite provision of a certain product, the access does not mean usage, because there are certain barrier dimensions that come in between. I mean, and as practitioners from the government institutions and ministries, it is very important to understand that a rollout of a program or supply of a program does not really mean usage of a program. And these were the reasons that actually came out, that why these people, why these households were not able to use that service from the very opening of the account to documentation to understanding of reading, then even after opening the accounts, understanding their rights, even traveling to that particular bank branch and dealing with the staff, their social mobility, and like there are 20 or 30 reasons which actually impeded these people to actually utilize this. And this is again, this is where the data conceals, and this is where the data does not give true picture, and you actually have to come around and work around the data to understand it. And this problem is not unique to the landscape of financial inclusion. It's applicable to any public policy problem that you can think of. For example, in education, the focus is on enrollment, and 95% of children worldwide are currently in school. But enrollment does not guarantee learnings. It's all about learning outcomes. Even you look at the data for Pakistan that is maintained for education, if you look at the data columns, there would be about the primary enrollment rate, the secondary enrollment rate, the tertiary university level enrollment rate. But the data does not talk about the learning outcomes. And in Pakistan, the largest data set of household survey, ASER, on primary and secondary education, that shows that grade 5 children in Pakistan have learning levels of grade 2. That a child who's actually in grade 5 has the ability of reading a sentence in English, simple addition subtraction in mathematics, or a sentence in Urdu that is equivalent to grade 2 level. So this is the learning outcome, and this is not what the data is revealing. The data is only showing the number of children enrolled and how the education is imparted in a country. So in terms of when we look at data, how do we dig it out? How do we interpret it? And what are the dimensions to be looked at? And what should be the vision that must be there? So data interpretation must focus on the outcomes that matter. Focusing on the proxy outcomes like number of accounts opened or what kind of policies were enacted and what did they entail is not important. What is important is focusing on the outcomes that we intrinsically care about. So it's not about how many beneficiaries we have enrolled. Of course, that is important in the enrollment process or the registration process, but what
is the outcome that we intrinsically care about. That is that how these beneficiaries can sustain and how they can be graduated out of the poverty, out of the program. So again, the focusing on the outcomes that we care about are actually poverty reduction or the barriers which actually stop such population from getting benefit from these policies. And again, this is very alarming. This is again one of the findings of this largest household data rounds in Pakistan, that learning level on the whole are low. Only 29% of 10-year-old can add and subtract single digit numbers. Now look at the gravity of the situation. Only like around 30% of our children, they cannot do single digit addition or subtraction. When I say single digit addition or subtraction, I mean adding any number from 0 to 9 or subtracting any number from 9, just like simply like 10-year-old, like students in grade 5, they cannot do this. This is what your data is actually showing you in terms of learning outcome. But when you look at the enrollment data, that will tell you a different story, that nearly majority, 90% of the child, they're getting education. So how do you extract data? How do you interpret it? How do you actually incorporate this evidence lens? So there are certain fundamental principles. So first of all, the first principle is that understand what data tells you and what it doesn't. The second principle is consider what is shown and what's not being shown by the data. Third principle is know where the data comes from, what is the quality of your data. And number 4 principle is do not jump to conclusion when you see any data. So that's like how do you interpret the data and you see it. And again, there are certain other principles, like yesterday, Dr. Anayatullah talked a lot about counterfactual and about context, like critical economy. So I will come to that detail later. So we are going to dive into the first principle, and now it will be an interactive session. You can see this graph. This is the US income per capita from 1967 to 2013. And this particular data was used for the largest Medicare program of US, Medicaid. It's like, again, under a program by government. It's health insurance offered to all, including the economically disadvantaged population. So just simply, here we have the time span. Here we have income per capita, $14,000 to $98,000 per annum. Simply, if anyone can tell me what's going on in this graph, please. So basically, this is aggregate data. This does not tell us about the disparity and differences. So it simply tells that the average per income per capita has increased, but whether the increase has been ultra rich have earned more money and the poorer have gotten more poor. So which option would you like to? Your responses can be one of these. Which one you would like to go for? 5. I cannot make any of these conclusion with this graph. Would anyone like to agree to this, or do you clearly see something happening in this graph? Anyone else? Ladies, please. Like, what do you see? What this blue line is trying to tell? If you can see, this is becoming steeper and steeper, increasing upward. Anyone? Yes. Option 2, despite some ups and downs, and not most of the people. Okay, sure. So, number of you think that the average person saw income rise during this period, and despite some up and down, by and large, most people income rose during this period. So, Islam, madam. All of the above. Okay. All of above, yes. Great. So, income rising, and this is a dream coming true. So, now what we have done, we have just broken down this data into quintiles right here in some brackets, and we are trying to look at the distributions. So what is happening here, that the earlier line, it has been broken down into 4 quintiles, and this was the earlier line, which was the mean, that was the average that was shown in the last graph. While when we distribute this data into different quintiles, what you can see here, what's happening here?
The same data, instead of just giving you the average or the mean, I'm now breaking down this data into multiple quintiles, and what this graph is telling you the story. Someone else who has not answered before, then I will come back to you. Okay. Okay, and what's happening for the red one? Income is increasing. Okay, now again, further breaking it down, we come to this graph. Again, this is the same data now plotted in this manner. We are actually looking at more deeper distributions. What is happening right here? Can someone tell me? The inequality, the privileged ones or the earlier richer ones going more rich. And what's happening? This is just a straight line at the bottom. So poor remaining poor and rich becoming richer. So certain level of inequality that is happening, which this graph fails to tell you. So what this whole narrative that I showed you tries to tell you, that be aware that the data you get may have some patterns in their distribution that are important and that a single stat cannot capture. So next time when someone comes up with a data that, this is the average that we have found out for a social protection program, that the household income of these beneficiaries, they have risen because of our intervention and we are doing really good. Just pose this question: what are the distributions? What are the distributions among different regions or among the quintiles? So in case of income distribution, we saw how looking at the mean income was not revealing the full story. The increase in income was very different for people at the top of the distribution than for the people at the bottom. So what are the key takeaways? Look for the patterns in distribution. Be aware of a single stat. A single stat will tell you incomplete story of interpreting the data. Okay, now, so we come to another example. Now just imagine that these are two columns where provider A is Easy Pesa and provider B is Jazz Cash. Okay, so of course this rollout of payments by the BISP authorities, they are at certain point of sales where these agents are sitting and they BISP beneficiaries withdraw this digital cash into real-time cash at these point of sales. So which of the two service providers would you choose if you are a BISP beneficiary and you are going for a cash withdrawal at a certain point of sale? Which of the two service provider would you choose for withdrawing cash at POS? And this is the response time. For example, you go once, the person at Easy Pesa takes 2 minutes to hand you over the cash. The fourth time you go, he takes 10 minutes to hand you over the cash. Whereas this is the Jazz Cash, and this is the number of minutes they take for actually when you are at the counter to actually give you that payment. So anyone from this group who would like to comment that which provider would, if you are a BIS beneficiary and you are like constrained with time, to which provider you will go, A or B? And let me give you a hint. B. There's someone at the back. Yes, B. Let me give you a hint. The average is same. If you add up everything and take out the average, it is the same. And why you would like to prefer B? Deviation, yes. So very right. Again, if you focus at the deviation is lesser in provider B as compared to provider A. However, the mean of both the same. So mean tells us the average response time. It does not tells us about the variation in the response time. Whereas standard deviation, it tells us about variation, but it does not tells us about the average response time. So you have to understand what each stat is trying to tell you and what it is concealing. Again, this is a social protection program in Africa, and this is maternal health care program, and where antenatal care, I mean the care of the mother and the child before the delivery, it's in place. And just imagine if the aim of the program is to ensure a minimum standard of care for a pregnant woman in your area, which of the following would be the best measure to achieve this aim? See, you are all practitioners. If this program is allotted to you,
with the aim that you must ensure a minimum standard of care for pregnant women in your area. And there are 4 options. Which of the following would be the best measure to achieve this aim? Number 1 is average number of antenatal visits. Number 2 is median number of antenatal visits. And number 3 is standard deviation of antenatal visits. And number 4 is proportion of pregnant women in the state who have had at least one antenatal visit. Someone who would like to answer? If you are the program director of this. Median. Anyone else? 4. And what would be the reason for selecting 4? Would you like to explain why not the first, any of the first 3? Forget about cash transfer. It's the aim is that there's a outreach in your area and the minimum standard that maximum women are able to avail. So okay. Yes, exactly. So maybe they are all coming from one area and you take out the average, and that does not show that the program is reaching out to all. So the last one, proportion of pregnant women in the state who have at least had one antenatal visit, it's more aligned with the aim that this program is given. Okay, so again, this is one of the, after delivering a program in an African country, this is what the government tried to do, is to actually measure the welfare of social protection beneficiary for this time period from 2002 to 2012. And you can see the trend line, you can see this is quite flat in nature. So what do you think, like if in African country of Tanzania, this measurement was done, what this graph depicts? हाँ, वेलफेयर मेजर एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम रोल आउट किया और उसकी फिर ये उन्होंने एक वेलफेयर एस्टिमेशन की कि लेट्स सी के हाउ लाइक व्हाट वाज द वेलफेयर। ऑफ कोर्स उसमें ये स्पाइक्स थी और ये सिचुएशन थी, लेकिन ऑन दी होल, ऑन दी एवरेज आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह के वेलफेयर आउटकम क्या निकल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। अब the same country, same estimation of welfare impact, what is happening in the left graph? There's an increasing trend. इसका मतलब है कि welfare जो है वो improve हुई है. So this is called cherry picking. Now this concept is called cherry picking of data. And what you're doing in cherry picking, that if someone wanted to convince you that a social protection program is not effective, all that person would have to do is to use a period of time that happens to coincide with their hypothesis, like the graph that I showed you earlier. Instead of showing you the full trend, it will show you half of the story. So the process of selecting a subset of data in a way that is potentially misleading is called cherry picking. And normally it's much more common than we think. And as policymaker, it is often tempting to focus on evidence, either evidence within a specific study or selecting particular studies while ignoring others. And this is the same practice that we do with data set. Okay? We, for example, if I have a data set available from 2001 to 2020, I will definitely pick it up और मैं उसके ऊपर study कर लूँगी. 20 साल का data है, 8 countries हैं, 10 countries हैं, it's good enough. But we are missing part of the story. We're missing part of the story because आपकी जो end में जो interpretations आएंगी, आपकी जो depictions आएंगी, वो इसी तरह की आएंगी. और maybe अगर आप थोड़ा सा, अगर हम अपना student time recall करें, तो आपको याद होगा कि estimations में हम कैसे shuffle करते थे variables, और अच्छा जी best results आ गए हैं तो इस combo को रख लें, बाकियों को drop कर दें. ठीक है? So this is called cherry picking of evidence. This is called cherry picking of data, and this is much more common even in institutional studies or even impact evaluations. Maybe ये common practice है to actually select a limited time period और उसकी basis पे inference generate कर दी, and not going back
to a larger data set which actually gives you the true picture. अच्छा, अब ये भी एक क्लासिक केस है, कंसिडर व्हाट्स शोन एंड व्हाट्स नॉट बीइंग शोन. अब ये थोड़ा सा ये ग्राफ छोटे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक्स एक्सिस पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, यानी कि 1000 लाइव बर्थ हुई और उसमें से कितने बच्चे फौत हो गए, ये वो है. और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, तो ये देखें 20 40 60 60 कंट्रीज तक ये बार हिस्टोग्राम्स जा रहे हैं, ठीक है. और आप देखें 0 10 20 30 40 और 50 और हायर, ठीक है, दिस मीन्स 50 और हायर. अब यहाँ पे आप क्या देखें, व्हाट दिस ग्राफ इज टेलिंग यू, there are a lot of countries, nearly 60 countries with zero infant mortality per 1000 live births. So some, at least some 60 countries are doing very good in this. 10 countries ऐसी हैं जहाँ पे 40 deaths per 1000 हो रही हैं. 20 countries ऐसी हैं, 20 countries ऐसी हैं जहाँ पे 20 deaths हैं, and 30 कुछ 18 countries ऐसी हैं जहाँ पे 30 हैं, और कुछ 16 countries ऐसी हैं जहाँ पे 40 deaths हैं. And what this last bar is showing you, anyone can tell me? लास्ट पे अगर आप देखें 50 और हायर, कितनी ये बन रही हैं कंट्रीज, कितनी बन जाएंगी यहाँ से देखें, 35 35 36, ठीक है. सो क्या ये लास्ट हिस्टोग्राम बार क्या आपको शो कर रही है? देखें, ये तो बड़ा क्लियरली जिसने भी ग्राफ ये डेटा प्लॉट किया उसने बता दिया कि जी इतनी कंट्रीज हैं जहाँ पे 10 डेथ्स हो रही हैं, इतनी कंट्रीज हैं जहाँ पे 30 हो रही हैं, इतनी है 40 है, 50 और हायर. इसका मतलब है, बट what you can infer, there are number of countries जहाँ पे 50 और higher deaths हो रही हैं, ठीक है. So there's like huge problem in number of countries जहाँ पे ठीक ठाक higher infant mortality rate है. अब इस ग्राफ में सेम डेटा है और सेम ये ग्राफ प्लॉट किया गया on the very same data. This is one way of showing this data, this is another way of showing this data. इसमें क्या हो रहा है कि 50 की बार को ब्रेक कर दिया गया है. जो 50 की बार यहाँ पे कंसोलिडेटेड आ रही है, इसको ब्रेक कर दिया गया है. और इतनी कंट्रीज हैं, कोई 18 कंट्रीज हैं जिनमें 17 कंट्रीज हैं जिनमें 50 डेथ्स हैं. फिर एकदम से ये ड्रॉप आ रहा है. कोई 8 कंट्रीज हैं जिनमें 60 और 70 डेथ्स हैं. और फिर ये बहुत ही मिनिमल ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे 80 90 और 100 और 110 डेथ्स हैं, ठीक है. अब just keep this graphs in mind. Now move to this third one. Again, same data, but different way of plotting it and different interpretation. इसमें अब regions उन्होंने प्लॉट कर दिए हैं. अगर आप ये देखें कि ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक जो है वो डार्क ब्लू में है, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रीन में, सब सहारन अफ्रीका इन पर्पल एंड साउथ एशिया इन रेड. इस ग्राफ से क्या आपको व्हाट यू कैन infer out of this graph, the last plot? Sub-Saharan Africa में सबसे ज़्यादा infant, because I mean there's a lot of purple color in the higher bars. अब try to understand what is happening here. Same data has been plotted in different manner, or the first histogram emphasizes the fact that a large proportion of countries have very high infant mortality rate, something that is harder to draw from the tapering high end of the second histogram. Finally, the third histogram shows that the high infant mortality rates are concentrated in particular regions of the world, जो कि sub-Saharan Africa. The point to understand is that the fact that you may have drawn different conclusion from different histogram does not mean that any of them are wrong or invalid. It's simply meant to show you that there are multiple ways of expressing the same information, but the fact that each of these graphs made you focus on a different aspect of the same data means that the producer of the analysis of graph can consciously or unconsciously lead you to a particular conclusion from that data. अगर आप खाली फर्स्ट डेटा देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा जी 50 कंट्रीज और हायर ऐसी हैं जिनमें तो बहुत ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, देयर समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू रोल आउट दिस प्रोग्राम्स. सेकंड को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हायर लेवल है वो तो बहुत few countries में है. That will totally change your vision. The third one will actually make you focus on the geography where the problem exists. So next time you encounter a graph or chart, think about other ways the same data can be expressed and how might alter your understanding of the underlying data. So you have to ask that what conclusion does a figure or table suggest and what other ways the data can be presented. Ji.
मैडम एक क्वेश्चन है कि मतलब जो अक्सर ये इंटरप्रिटेशन होती है, आप कहीं ना कहीं स्टेप शुरू करते हैं। लेट्स से कि आपने पहला ग्राफ बनाया डेटा से, जी जी तो इसी का आगे ये स्टेप नहीं होगा कि आपने पहले देखा कि 50 और हायर ये हैं, फिर आप उसको ब्रेक डाउन ठीक है, करेंगे। ब्रेक डाउन कर लिया ना, तो आपने उस पे आप रुक नहीं गए, हम्म, मतलब आप एक उस पे उस वाली assumption पे रुक नहीं गए मकसद कि ये है कि आइट्रेशन स्टेप है, तो ये मतलब आगे चलने वाली बात बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मतलब वो चीज़ प्रेजेंट गलत हुई है या उसमें। नहीं देखिए, नॉर्मली अगर मुझे कहा जाएगा ना कि ग्राफ प्रेजेंट करें, तो मैं एक या दो ग्राफ बना लूंगी, मैं उसी ग्राफ को बार बार मोल्ड नहीं करूंगी, ठीक है ना। इट्स जस्ट कि जिसने भी ग्राफ फर्स्ट टाइम में बनाया होगा, अगर उसकी डिफरेंट एक अंडरस्टैंडिंग आई होगी, जिसने सेकंड वाला ग्राफ बनाया होगा उसकी सही अंडरस्टैंडिंग आई होगी, ठीक है। हालांकि पहले वाला ग्राफ भी गलत नहीं है, उसको उसने डाटा प्लॉट किया, बिल्कुल सही तरीके से प्लॉट किया, ठीक है। लेकिन आपकी परसेप्शन और आपकी इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज हो रही है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट इन तीनों में से कोई भी ग्राफ गलत नहीं है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्लॉटिंग द राइट डेटा। लेकिन हर ग्राफ से यू आर एक्चुअली ड्राइंग अ डिफरेंट इन्फ्रेंस, तो यू हैव टू बी राइट अबाउट कि आप जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक है कि इतनी इतनी लॉजिक होनी चाहिए कि ग्राफ को सेकंड मैनर में प्लॉट किया जाए अगर आपने उसको देखना है। लेकिन वो भी एक तरीका है, 50 और हायर आपने कर दिया, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये गलत प्लॉट किया हुआ है। लेकिन हर ग्राफ की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट निकल रही है, एंड इट इज एक्चुअली लीडिंग यू टू फोकस ऑन अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशंस के इसकी रियल टाइम क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग एल्स, लेट मी प्लॉट इट दिस वे। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फिर आप उस अप्रोच पे कंटिन्यू मैडम करें। जी जी ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे होता है ना, अक्सर के ट्रेनिंग्स हम प्लान करते हैं तो वो हमें कह देते हैं कि जी आप स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग करवा दें या डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवा दें। तो उसमें फिर हमें मतलब डाटा की इंटरप्रिटेशन ये आती है कि इसमें मेल्स कितने थे, फीमेल्स कितने थे, ठीक, फिर ये बता दें टेक्निकल के कितने थे, वोकेशनल कितने थे। इस तरह बिल्कुल वही एक डाटा जो होता है वो सेग्रीगेट हो रहा था, बेसिकली ये उसी की बिल्कुल इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल ठीक जी। चेरी पिकिंग जो आपने कहा, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो उस वक्त वही पिक्चर होती है जो उन्होंने पेश की है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन या कोई और? देखें, ये बेसिकली ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट तब है कि स्पेशली फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, या आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाती है और उसमें पिछले 10 साल की आपकी सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की परफॉर्मेंस है, तो यू मस्ट हैव दिस थिंग इन माइंड, और दिस एटलीस्ट दिस क्यूरी इन माइंड कि ये तो 10 साल की है, तो इट कुड बी अ केस ऑफ चेरी पिकिंग। व्हाई नॉट कि ऑर्गेनाइजेशन अगर आज से 40 साल पहले एस्टेब्लिश्ड है या 30 साल पहले एस्टेब्लिश है, तो फॉर एग्जांपल प्रोग्राम जो है वो 25 साल से या 15 साल से चल रहा है, तो उसकी खाली 5 साल की क्यों हम एवेल्युएशन कर रहे हैं, उसकी पीछे से प्रॉपर टाइम फ्रेम में क्यों नहीं हुई है, डिस्पाइट कि डाटा अगर मौजूद था। अब ठीक है, डाटा लिमिटेशन होती है, बहुत से केस में डाटा होता ही नहीं है, ठीक है, देन यू हैव टू गो इनटू फील्ड और वो वाले मसले के अलग हैं। लेकिन अगर तो डाटा मौजूद है, मतलब अब दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस कि जब हम पाकिस्तान के बहुत से इंडिकेटर्स का एजुकेशन का जब हम करते हैं, तो हम अक्सर 10 साल पहले का डाटा लेके स्टार्ट कर देते हैं, 12 साल पहले का कर देते हैं। एजुकेशन का डाटा जो है वो 40 साल से प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन है या सब सिलेक्शन है ना, अपनी मर्जी से, जिस तरह चेरी पिकिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आप वो उसमें चेरी के बाग में जाएं और जो अच्छी अच्छी मोटी और राइप वाली हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, बाकियों को आप छोड़ दें, आपने अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर ली। तो ये है कि मर्जी का डाटा सिलेक्ट कर लिया, व्हिच इज नॉट गिविंग यू अ होलिस्टिक पिक्चर, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो ऑलवेज क्वेश्चन इफ यू हैव द कंप्लीट डाटा सेट, तो ये रिगर होनी चाहिए कि यू नीड टू नो कि एटलीस्ट वो इतना उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए कि दैट इज एबल टू प्रोवाइड यू द राइट आउटपुट्स और इन्फ्रेंसेस। So what are the key takeaways in data interpretation, and also when you are extracting for some evaluation, that be aware of cherry picking, look beyond single dimension of data. अच्छा, अब ये बड़े मजे की एग्जांपल है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी अफ्रीका का एक बेसिक हेल्थ यूनिट है। ये सीन अगर आप पिक्चर को गौर से देखें, तो एक औरत जो है वो अपने बच्चे को जो वेइंग स्केल है उसके ऊपर वे करने की कोशिश कर रही है। ये जो बंदा है ग्रीन कैप में, ये रिकॉर्ड कर रहा है बच्चे का वेट, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये एक स्केल हैंग कर रहा है, ठीक है। और this image highlights five section which reveal potential sources of error in measurement, ठीक है।
कि 5, ये पूरा इमेज जहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हुए हैं, ये 5 पोटेंशियल सोर्सेस हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ पे मेजरमेंट एरर हो सकता है डाटा रिकॉर्ड करने में. 1, the scale itself might be poorly calibrated resulting in incorrect readings. ठीक है, हो सकता है कि स्केल की सेटिंग राइट ना हो और इनकरेक्ट रीडिंग्स. अक्सर हमारी वेइंग मशीन 5 किलो 4 किलो कम दे देती हैं. ठीक है. 2, different mothers might place the slings in different position which could affect the scale reading. स्लिंग की पोजीशन चेंज करें तो स्केल की रीडिंग डिफरेंट आ जाती है. 3, the sling might be different for different babies, adding extra weight to some babies but not to others. जिस बच्चे का वेट ज्यादा होगा उसके लिए डिफरेंट स्केल और स्लिंग की रिक्वायरमेंट होगी. 4, the health worker might not read the weight correctly, adding error to measurement. ठीक है, वो एक नोटपैड के ऊपर कर रहा है, हो सकता है वो मिस कर दे, गलत रीडिंग कर ले. And or he might not record the weight correctly or may forget to record it entirely. So 5 potential sources. और ये अगर आप ये देखें कि ये जब फॉर एग्जांपल आप अगर सोशल प्रोटेक्शन के साथ इसको रिलेट करें कि आप अगर सर्वे के लिए गए हैं, एनएससीआर की अपडेशन के लिए गए हैं, तो ये सारे जो रिकॉर्डिंग के एरर्स हैं या सवाल जवाब ठीक ना करने के एरर, ये सब मेजरमेंट एरर्स में ये आ सकते हैं अगर आप वर्बली उसको सर्वे की सेंस में देखें. सो ये जो मेजरमेंट एरर है, ये थोड़ा सा बीच में स्टैट्स आ गई है, लेकिन व्हाट दे कॉज, they actually lead to systematic error which consistently overstates or understates the true value. और इसकी एग्जांपल क्या है कि मेजरमेंट स्केल दैट एड्स 10 kg टू एवरी मेजरमेंट. ठीक है, सो दिस इज अ सिस्टमैटिक एरर. इसी तरह अंडरस्टैंडिंग इनकम इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ पॉवर्टी प्रोग्राम. तो ये अंडरस्टेट ओवरस्टेट भी बेनिफिशियरीज के पास जो आ जाते हैं, दे आर नेवर श्योर. तो कभी कह देते हैं जी हमारी हाउस होल्ड इनकम मंथली जो है वो 12,000 है, कभी 10,000 है, देर नॉट, तो वो भी अंडरस्टेट कर देते हैं, ओवरस्टेट कर देते हैं. इसी तरह नॉन सिस्टमैटिक एरर, अगर आपकी डाटा की रिकॉर्डिंग का मेजरमेंट एरर है तो वो नॉन सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है. इट एड्स रैंडम एरर टू मेजरमेंट बट करेक्ट ऑन द एवरेज. कि आपका ये जो एवरेज वैल्यू से आगे पीछे हो जाएगा, रैंडम एरर ऐड हो जाएगा, लेकिन एवरेज के आसपास होगा, एवरेज के इर्द गिर्द होगा. विच इज, अगर उसकी एग्जांपल क्या है कि स्केल दैट इज एक्यूरेट विद इन ±10 kg. ठीक है, या मिस रिमेम्बरिंग हाउ मच अ पर्सन स्पेंट इन द पास्ट मंथ, लेकिन वो एवरेज के आसपास होता है. ठीक है, सो दीज आर द एरर्स के जो मेजरमेंट एरर हो सकते हैं डेटा रिकॉर्डिंग में. और इसमें द थिंग इज के इसमें जो की टेक अवेज हैं कि यू हैव टू आस्क इज फाइंडिंग स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. ये भी एक है कि जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं या डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक वेरिएबल का बार बार आ रहा है, तो दिस इज नॉट हैपनिंग लाइक बाय एन इंसिडेंट. इसका मतलब है कि आप उसको बार बार अगर करेंगे तो 95% ऑफ द टाइम जो है वो यही रिलेशनशिप आएगी या यही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा. देन यू हैव टू आस्क इज रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपने रैंडम सैंपल लिए, अगर आपने वैल्यूएशन की, अगर आपने जो डाटा कलेक्शन की है उसमें आपने रैंडमाइजेशन की है कि आपने बाय डिजाइन इसको सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, एनएससीआर की अपडेशन के लिए गए जी इस घर को करना है, चौथे घर को करना है, इस तरह करके वो नहीं, आपने रैंडमली आपने जाके सर्वे करना है और डाटा कलेक्शन करनी है. एंड देन सिस्टमैटिक एरर्स हैव वर्स कॉन्सिक्वेंसेस. मैंने आपको सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक एरर्स दोनों दिखाए हैं. उसमें अब सिस्टमैटिक एरर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है विच कंसिस्टेंटली ओवरस्टेट और अंडरस्टेट्स द ट्रू वैल्यू. जो जाके ट्रू वैल्यू को हिट करता है तो वो आपको दैट इज नॉट द राइट डाटा कलेक्शन, और आपको हमेशा वो इन्फ्रेंसेस भी जो है वो गलत देगा, आपकी इंटरप्रिटेशन भी गलत होंगी. लास्ट प्रिंसिपल इज डू नॉट जंप टू कंक्लूजन. और ये हम अपनी पब्लिक पॉलिसी में पिछले 50-60 साल 70 सालों से यही करते आ रहे हैं कि किसी और कंट्री का प्रोग्राम देखें, अच्छा बांग्लादेश में वाला प्रोग्राम चला था, चलें जी ये कर देते हैं, पाकिस्तान यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा. ठीक है, इतने 3 करोड़ का पीएचडी स्कॉलरशिप पर स्कॉलर निकाल देते हैं, 5,000 पीएचडी का प्रोग्राम निकाल देते हैं. इट विल बी अ चेंज, सोशो इकोनॉमिक चेंज, एंड इट विल ऐड टू जीडीपी ग्रोथ. दिस इज जस्ट लाइक जंपिंग टू कंक्लूजन. ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखें तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, एक्स एक्सिस पे है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लाइवलीहुड जनरेशन फॉर सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिशरीज. ठीक है, बहुत से आप देखते होंगे ऐसे प्रोग्राम रोल आउट किए जाते हैं या इंटेंशन होती है कि कुछ ना कुछ वो लाइवलीहुड जनरेशन हो जाए. ठीक है, वो बिस्प का वसीला है, हक वसीला रोजगार, इस टाइप के. एंड देन ऑन द वाई एक्सिस देयर इज हाउस होल्ड इनकम एंड यू कैन सी अ पैटर्न इन बिटवीन. व्हाट दिस पैटर्न इज टेलिंग यू, what this pattern is trying to tell you?
Okay, so you can see this relationship through this graph. So if I ask you this question, इस ग्राफ से ये रिकमेंडेशन निकल रही है, expand capacity building workshops to social protection beneficiaries, because somehow this it's pointing to a relationship that when you give capacity building training for livelihood generation to a social protection beneficiary household, it increases the household income. So if I ask you, do you agree with this recommendation, yes or no? जो yes को कर रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, जो no कर रहे हैं वो. Who agree with this recommendation? No one agrees with this. आप agree कर रहे हैं? अच्छा, आप क्यों agree कर रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है ग्राफ में? अच्छा, ठीक, ओके, ठीक. और जो एग्री नहीं कर रहे वो क्यों नहीं एग्री कर रहे? डिसएग्री जो कर रहे हैं. बिल्कुल. सो यू आर राइट. द थिंग इज के ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोरिलेशन है, ठीक है? दैट व्हिच मींस के अ रिलेशनशिप मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कॉजेलिटी नहीं है. और कॉजेलिटी क्या होती है कि x causes y. अगर मैं आपको कहती ना कि यहाँ पे कॉजेलिटी है इसके बीच में, x causes y, इसका मतलब है कि 100% capacity building training to social protection beneficiary household will result in increase in income, and that is totally understood, and that is the cause. ठीक है? So do not confuse correlation for causality and do not jump to conclusion. यहाँ पे there can be many confounding variables. हो सकता है उस household को बाहर से कोई रेमिटेंस आ रही हो, उनका कोई लेबर में गया हो बाहर, ठीक है? हो सकता है उस इलाके में कोई माइक्रो फाइनेंस का एनजीओ प्रोग्राम चल रहा हो जिससे उनको माइक्रो फाइनेंस लोन दिया हो जिससे इंक्रीज हो गई हो. और ये भी हो सकता है कि कोई पुराना कर्जा उनके घर में वापस आया हो, किसी ने पुराने पैसे वापस किए हो. सो देयर कैन बी मेनी कंफाउंडिंग और अदर वेरिएबल्स दैट कैन एक्चुअली. लेकिन एक रिलेशनशिप पैटर्न भी नजर आ रहा है. मतलब इट्स अ केस ऑफ कोरिलेशन फॉर श्योर, बट नॉट अ केस फॉर कॉजेलिटी. सो जब भी आपके पास इस तरह की परसेप्शनल आए कि जी हमने फील्ड में जाके ये देखा, हमने उनसे सवाल किए क्वालिटेटिवली, हमने फोकस ग्रुप डिस्कशन की और उन्होंने ये बताया कि जी ऐसा हो गया, ये दिस इज मोर लाइक कि यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन. सो जस्ट इवेल्युएट करें इसके आपके इन्फ्रेंसेस, इसकी मॉडलिंग या इसकी जो सारी जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो आपको बता देगा. जस्ट प्ले विद द डेटा. डेटा विल गिव यू प्ले विद द डेटा इन द राइट मैनर और वो आपको साउंड इन्फ्रेंसेस देगा. जी. मेरा जो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ वो ये है कि इसके मुताबिक तो फिर ऐसे है कि हमारी कोई भी स्टडी जो है वो अगर कोई रिजल्ट क्रिएट करती है तो वो इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं होगी. नहीं देखें, एक अगर वो आपका जब आपने मॉडल एस्टिमेट कर लिया उसमें एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया, मैंने जो आपको पीछे जो करवाया था कि अगर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंस आ गई है तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर रही हैं. लेकिन ये सिर्फ एक वो है, आप कह लें कि एक अज्यूम करना है कि एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन असल में वो नहीं एग्जिस्ट कर रही अनटिल अनलेस कि आप उसका यू चेक फॉर द कॉजेलिटी. ठीक है? और उसको चेक करने के लिए ये कॉजल मॉडल्स हैं. आपको कल डॉक्टर नायत ने जो सारे मॉडल्स जो कल पढ़ाए थे, ऑल ऑफ देम वर कॉजल रिलेशनशिप मॉडल्स. ठीक है? सो ये उसमें आपको आ जाएगा. लेकिन दिस इज मोर लाइक कि अज्यूम करना कि जी इसकी वजह से ये हो गया, असल में वो नहीं हो रहा होता. देयर मेनी अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट और नॉट होली सोली दिस एस्पेक्ट. हाँ जी 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 बिल्कुल वो है. बिल्कुल वो अभी वो देखें वो भी बिल्कुल इतनी assumptions हैं, लेकिन जब हम कॉजल फ्रेमवर्क अप्लाई करेंगे या प्रॉपर इसको उसमें इकोनोमेट्रिक एनालिसिस में लेके जाएंगे, वहां पे फिर आपको रिलेशनशिप्स पॉजिटिव, नेगेटिव, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट ये सारी आ जाएंगी, उससे पता चल जाएगा. सो लेकिन अगर आप ये देखें, अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें, यू हैव टू कंबाइन ऑल प्रिंसिपल. ठीक है? अगर आपने चेरी पिकिंग नहीं करनी, आपने सही डाटा सेट यूज करना है, आपने जंपिंग टू कंक्लूजन नहीं करनी, आपने कोरिलेशन के ऊपर नहीं जाना, आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया उसमें मेजरमेंट एरर नहीं होना चाहिए, आपका डाटा जो है वो रैंडमाइज्ड होना चाहिए. उससे पीछे भी चले जाएं कि इंटरप्रिटेशन में भी देयर नंबर ऑफ वेज टू प्लॉट द सेम डाटा. आपने उसको होलिस्टिकली कवर करना है और इसी तरह से आपने वन स्टैट या वन डायमेंशन को नहीं देखना. तो आपने सारे प्रिंसिपल्स को कंबाइन करेंगे तो यू नो हाउ टू नेविगेट थ्रू डाटा. ठीक है? अदरवाइज डाटा विल कीप ऑन रिवीलिंग यू और कंसीलिंग certain aspects which you really need to know.
जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, दिस इज अगेन, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हाउ आप डाटा के एंगल से और इंटरप्रिटेशन के एंगल से आप किस तरह से लेआउट करते हैं। दिस इज द एक्चुअल प्रोग्राम, दिस इज द थ्योरी ऑफ चेंज फॉर अ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम व्हिच वाज डन बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड बिस्प, ठीक है। सो वी वर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और आप इस पे देखिए, कल आपको थ्योरी ऑफ चेंज का भी डॉक्टर नाइथ ने बताया था कि theory of change है कि how the whole journey from point A to Z, where you break down the whole journey into multiple steps, कि सबसे पहले आपकी इंटरवेंशन या इनपुट हो जाती है, ठीक है। द डिजाइन दैट यू इंट्रोड्यूस्ड, उस डिजाइन को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट निकलती है, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टेज आउटपुट निकल रही है और उस आउटपुट का फिर कुछ आउटकम निकलता है, ठीक है। एंड देन इज द इवेंचुअल इम्पैक्ट विच यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, ठीक है। अब ये जो हमने किया था, दैट वाज फिजिबिलिटी असेसमेंट ऑफ दिस बेनिफिशियरी कमिटीज, कि उनमें इतना दम है, इतना उनमें पोटेंशियल है कि उनके ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप की इंटरवेंशन लॉन्च कर दी जाए, ठीक है। कल हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप डिस्कस किया था कि किस तरह 25 खवातीन जो सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिशरीज अराउंड द वर्ल्ड वो इकट्ठी होती हैं, ग्रुप बनाती हैं, उसमें वो मिलके सेविंग करती हैं, फिर आगे उसमें और भी मल्टीपल डिजाइन आ जाते हैं, बोरो भी करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन ये चेक करना चाह रही थी कि पाकिस्तान की जो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बेस्ट बेनिफिशियरी कमेटी का, उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि उनको अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की इंटरवेंशन लीवरेज करें तो व्हाट वुड बी द आउटकम। तो अब इसमें हमने क्या थ्योरी ऑफ चेंज बनाई, हमने कहा कि हम जो बेस्ट बेनिफिशियरी कमेटीज में जो खवातीन एनरोल्ड हैं उनके हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे और उनको एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर दी जाएगी, ठीक है। अनकंडीशनल तो उनको मिल रही है और वसीला तालीम के साथ कंडीशनल उनको मिल रही है, उनको वही जो कंडीशनल हम मजीद कंडीशनल कैश ट्रांसफर देंगे और उसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ उनको लिंक कर देंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो अकाउंट है 25 खवातीन का वो नेशनल बैंक में खुलेगा, उसके अंदर वो सेव करेंगी और हर महीने वो एक लोन बन के रोटेट होगा, हर एक मेंबर को छोटी सी किस्त होगी, ठीक है। मॉनिटरिंग होगी, उसकी हैंड होल्डिंग होगी और फिर उस पर लाइवलीहुड जनरेशन के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी कि कोई ना कोई अपना उस अमाउंट से वो छोटा मोटा कारोबार कर लें, ठीक है। और उसमें हमारी आउटपुट क्या थी थ्योरी ऑफ चेंज में, आउटपुट में क्या था एक्चुअली इसकी, कि जो कैश कंट्रोल होता है ना वो वुमेन में थ्रिफ्ट हैबिट पैदा करता है। एंड व्हाट इज थ्रिफ्ट हैबिट, कि वो सिर्फ कंज्यूम नहीं करती, वो सेव भी करती हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। क्वालिटी दैट इज मिसिंग इन मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, ठीक है। दैट इज वाई अगर आप सारी दुनिया के बड़े बड़े प्रोग्राम देख लें, मेक्सिको का देख लें, जमैका का देख लें, पाकिस्तान का देख लें, बांग्लादेश का देख लें, रिसिपिएंट हमेशा औरत होगी, ठीक है। आउटपुट इसकी क्या होनी थी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप women, they consume more, they save more, they pool in self help group funds, deposit in linked banks and avail within group loans from these accounts, ये इसकी आउटपुट होनी थी, ठीक है। और उसका आउटकम क्या होना था, एक दफा जब वो इस सारी एक्टिविटी से गुजर गई, इस आउटपुट से गुजर गई, तो उसका आउटकम क्या आना था कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना था, रिकग्निशन स्टेटस ऑफ वुमेन बढ़ना था हाउस होल्ड में। और हमारे पास ऑलरेडी ना इसकी बड़ी एविडेंस थी कि हमने नोट किया था कि जब हमने सर्वे किया था, जो बेस्ट बेनिफिशियरी कमेटी की जो मदर लीडर होती है ना, जो उनको लीड कर रही होती है, जो मीटिंग्स कन्वीन कर रही होती है, वो ओवर टाइम सारी स्ट्रीट स्मार्ट हो गई थी। उनमें से मेजोरिटी ने माइक्रो फाइनेंस जो लोकल थे उनमें से कर्जे लिए हुए थे, उनकी बिस्प ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन बढ़ गई होती, सोशल मोबिलिटी बढ़ गई, हालांकि एक वॉलंटरी स्ट्रक्चर था, उसमें कोई इंसेंटिव नहीं था, लेकिन वो स्ट्रीट स्मार्ट हो गई थी और वो बड़ा मतलब अपने ग्रुप से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही थी, लीड करके और थोड़ा इस तरह करके। तो वी हैड दिस एविडेंस फॉर कि ये इनका ना, इनका रिकग्निशन स्टेटस जब ये सारी इस एक्टिविटी से गुजर जाएंगी तो ये वाली आउटकम आ जाएगी, ठीक है। और फाइनल इम्पैक्ट क्या था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम था, कि हमने इनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट ऑफ एक्सक्लूडेड रूरल वुमेन ऑफ पाकिस्तान को हमने इंक्रीज करना है, ठीक है। अब ये देखने में बड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रोजेक्ट तो अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है, लेकिन ये देखने में बड़ा हाइपोथेटिकल लग रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल नैरेटिव एंड स्टोरी, लेकिन यू कैन ब्रिंग एवरीथिंग डाउन टू क्वांटिफिकेशन, टू एन इंडिकेटर, टू अ मेजरमेंट। और ये इसका लॉग फ्रेम है, ठीक है। आपकी थ्योरी ऑफ चेंज आती है एक लॉग फ्रेम के साथ, और लॉग फ्रेम जो होता है दैट इज क्वांटिफाइड। एक मिनट में बस ये कंप्लीट करूँ फिर मैं आपको लेती हूँ। लॉग फ्रेम जो आपका होता है ना, दैट इज क्वांटिफाइड, there is a variable, there is an indicator for all of your steps, for all of your activities। और अब आप इसमें देखें कि लॉग फ्रेम इसका क्या कर रहा है। ये सारी वो कहानी थी जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में सुनाई, ठीक है। ये आपके ऊपर थ्योरी ऑफ चेंज है, ये सारा वो नैरेटिव है। अब पहला क्या था कि ये विमेन का हमने बनाना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको कंडीशनल कैश ट्रांसफर देनी है और बैंक से लिंक करना है। और उसके बाद इसका लॉग फ्रेम में इंडिकेटर क्या है कि नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएटेड इन रूरल एरियाज,
where each group comprises of 20 to 25 women led by mother leader and total number of women enrolled. ठीक है, दो वेरिएबल्स आपके पास यहीं पर आ गई, नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएटेड, टोटल नंबर ऑफ women enrolled in this. ठीक है, सेकंड क्या है, अमाउंट ऑफ कंडीशनल कैश ट्रांसफर डन इन द नेम ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज. ठीक है, अब वो जो उनको आप पहली वाली कंडीशनल कैश ट्रांसफर दे रहे हो उससे तो उनका गुजारा हो रहा है. ठीक है, वो सेविंग इससे नहीं कर सकती, इनको एडिशनल देनी पड़ेगी. ठीक है, तीन वेरिएबल्स आपके फर्स्ट स्टेप से जनरेट होगी. ठीक है, सेकंड क्या था कि हमने कहा जी कैश कंट्रोल डेवलप करेगा, इनमें थ्रिफ्ट हैबिट करेगा. ठीक है, इनका सोशल कोलेटरल बढ़ेगा, पीयर प्रेशर क्रिएट होगा. यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सेविंग डन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप फीमेल मेंबर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप एज अ होल. अमाउंट जो पार्क होगी बैंक में अमाउंट, वो आपका एक इंडिकेटर है, आपका डेटा है. लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑफ एसएचजी मेंबर. ठीक है, अब ये सेव कर रही हैं, इनको पैसे मिल रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं ये कंजम्पशन में निकलेगा ना, या एजुकेशन में चला जाएगा, या डेली कंजम्पशन में चला जाएगा, या किसी और लाइफस्टाइल इंडिकेटर में चला जाएगा, वो भी आप सर्वे से कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड क्या था आउटपुट में, क्या था कि women consume more, save more, pool funds. The saving is then lent to group member as soft loans, cyclical for business activity. So number of SHG accounts opened in linkage banks. ठीक है, number of SHG loans extended to SHG members. जिस बैंक में पार्क हुआ है, जो लोन एक्सटेंड कर रहा है, वो उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी अमाउंटाइजेशन रिकॉर्ड कर रहा है. ठीक है, वो भी रियल टाइम डेटा है. ठीक है, जो बैंक के पास है, जो आपको अवेल होगा. आगे कॉन्फिडेंस लेवल और ये जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स थे, अब इसका क्या है, ये सर्वे से आप मेरे ख्याल में कैप्चर करते हैं. जब भी आप स्टडीज करते हैं तो आप चेकआउट करते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर औरत की कितनी इंप्रूव हुई, कम्युनिकेशन लेवल कितना हुआ, कितने डिफॉल्ट्स. अब प्रोग्राम नहीं भी वर्क कर रहा, अगर आपका लॉग फ्रेम थ्योरी ऑफ चेंज ब्रेक हो रही है, तो कितनी डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, लोन लिया लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं दी. ठीक है, तो सब एवरी एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ चेंज इज मेजरेबल. जो भी आप थ्योरी ऑफ चेंज सोच रहे हैं, उसके आगे एक क्वांटिफाइड वेरिएबल है. मेरे पास इस वक्त 10 प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, लम्स की स्टडीज हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ चेंज बनी हुई है. वैक्सीनेशन, कोविड की वैक्सीनेशन, एवरी इंडिकेटर इज क्वांटिफाइड. ठीक है, कि हमने ये करना है, ब्रेक डाउन, लॉग फ्रेम, डेटा, क्वांटिफाइबल डेटा, डेटा की शीट्स की स्प्रेडशीट्स हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गेट इनटू रियल टाइम डेटा इवैल्यूएशन, एक्सट्रैक्शन एंड इंटरप्रिटेशन. और एक मिनट, ये अब ये भी डेटा का हिस्सा है, इम्पैक्ट मेजरमेंट का. ये आपको कल डॉक्टर नायत ने थोड़ा सा बताया था. ये यहाँ पे बस ये है कि ये एक समझे एक टाइमलाइन है, और ये आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो भी आपका सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, ये आपका स्टार्ट हुआ. सो ये देखने में तो अच्छा लग रहा है कि जी बहुत उसी तरह का कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, लेकिन यू कैन नेवर कमेंट ऑन इट जब तक आपके पास काउंटर फैक्चुअल ना हो. ठीक है, उसकी सादा से एग्जांपल ये है, ये आपका पिछला वाला ग्राफ था जो मैंने आपको दिखाया कि बड़ी अच्छी लाइन जा रही है. ठीक है, और ये अब समझे कि आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, कंडीशनल कैश ट्रांसफर को डबल कर दिया. ठीक है, जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर है उसकी अमाउंट डबल कर दी. ठीक है, और आपका ग्राफ ऐसे ये गया है. ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि आप अगर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग या लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर देते उन पैसों से, और कंडीशनल कैश ट्रांसफर, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर की अमाउंट को डबल ना करते, तो योर काउंटर फैक्चुअल वुड हैव बीन लाइक दिस. ये क्या शो कर रहा है कि आपका वो वाला जो प्रोग्राम था, उसकी ट्रेजेक्ट्री जो थी वो ज्यादा इंप्रूव्ड होती. इन इट सेल्फ अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इससे लग रहा है कि ऑल इज गुड. ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रोग्राम इज रियली वेरी इफेक्टिव. लेकिन यू कैन नेवर कमेंट until unless you have a counterfactual. ठीक है, and what is counterfactual? What would have been the outcome if the program would not have been there? ठीक है, और अभी ये भी बात करने में बड़ी हाइपोथेटिकल लग रही है कि भाई मुझे कैसे पता कि प्रोग्राम नहीं होगा तो क्या आउटकम होगा. इसीलिए फिर हम कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप्स बनाते हैं. ट्रीटमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं वो वाली, और कंट्रोल ग्रुप को स्टेटस को पे रखते हैं. कंट्रोल ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, वो जिस तरह से पहले चल रहा था वो चलता रहेगा, वो स्टेटस को में रहेगा, उसको कोई इंटरवेंशन नहीं मिलेगी. सारी ट्रीटमेंट ग्रुप को मिल जाएगी. और फिर ट्रीटमेंट ग्रुप के जब इंडिकेटर्स ऊपर होंगे या नीचे होंगे, उसको आप कंपेयर करेंगे कंट्रोल ग्रुप के साथ, कि जब अगर इनको प्रोग्राम नहीं मिलता तो ये ऐसे के ऐसे ही रहते. आपने ट्रीटमेंट दे दिया, उनकी इनकम ऊपर चली गई, तो बट यू कैन नेवर डिटर्मिन इन आइसोलेशन कि दिस looks like a good program until unless you are able to devise a counterfactual. So I will stop here, और हमजा वो जरा शिफ्ट कर दें उस पे, दूसरी वाली जो एक्सपेंडिचर वाली थी.
Now I'm just presenting some quick 4 graphs on the expenditure of social protection. ठीक है, एक global graph है and the rest of them are on Pakistan. और again I'm going to ask you question, और since आपने इस पूरी presentation से गुजर चुके हैं तो आपको बेहतर understanding होगी how to actually look at the data, how to interpret the graph. ये वाली नहीं है, दूसरी वाली है expenditure के लिए. वो जो पहले आपने खोली थी ना 4 ग्राफ पहले. So ये एक simple मैं आपको just giving you an overview of what is the social spending as percentage of GDP in OECD countries. ठीक है, ये उनकी OECD की रिपोर्ट है 2023 की. और just to have a basic idea कि countries की क्या social spending है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है. और इसमें अगर आप ये देखें कि नीचे countries हैं और इधर percentage GDP है, और इसमें अगर आप focus करें कि ज़्यादातर इसमें यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो अगर आप फोकस करें कि तकरीबन हर कंट्री का जो सोशल स्पेंडिंग पोर्टफोलियो है दैट इज ग्रेटर देन 20%, 25%, यानी कि 1/4 जो है वो सोशल स्पेंडिंग है. पाकिस्तान की जरा कम है इनसे, लेकिन आप कोई भी यूरोपियन कंट्री यहाँ पर देख लें, इवन यहाँ पे अगर आप यूएस को भी देख लें, इधर ही कहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें 22.7. ठीक है, इसकी फ्रांस की सबसे ज़्यादा है. ये पूरा जो ब्लॉक है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनकी कितनी सोशल स्पेंडिंग है कि वो कम से कम अपना 1/4 जो है उसको सोशल स्पेंडिंग में और सोशल सेक्टर में खर्च कर रहे हैं. ठीक है, ये सिर्फ कुछ ग्राफ्स हैं जो मैं आपके साथ करूंगी. इसको अगर देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, और ये आपकी है सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर को देखें, ये रेड में है 2016-17 टू 2020-21 कि आपके फिगर्स आ रहे हैं, मिलियन में हैं. और अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये एक्सपेंडिचर है बिस्प का, एसटीजीज का और पीबीएम का. ठीक है, इसमें आपका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी पोर्टफोलियो शामिल है, और बेनजीर इनकम सपोर्ट. सॉरी, ये एक्चुअली वो प्लेसमेंट ग्राफ की. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. तो आप ये देख लें कि आपकी ये 259 बिलियन, और इसमें एक देखें पैटर्न आ रहा है. एनीवन वुड लाइक टू कमेंट ऑन द पैटर्न ओवर द इयर्स? कि आपको क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान के ग्राफ में कि 2016-17 से डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, तो लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे फोकस करें 2019-20 में, तो शायद ये कोविड का आपको कोविड की एलोकेशंस जो हैं वो जो एहसास इमरजेंसी कैश और उनकी वजह से ये 280 अरब पे चला गया, लेकिन ये 218-19 में भी डिक्रीज हुआ है. तो इसका मतलब है कि आपकी सोशल स्पेंडिंग जो है ओवर द इयर्स डिक्लाइन हुई है, बट व्हेन द डिजास्टर कैटास्ट्रोफी हिट अस तब ये पोर्टफोलियो इंक्रीज हुआ है. जस्ट इसमें थोड़ा सा ये दिखाना था. आगे थोड़ा सा करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ. जी जी, हाँ, लेकिन ये देखें ना, ये जो उन्होंने एलोकेशन की है ना, यहाँ पे बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि ये बिस्प का है, एसटीजी का है और पीबीएम का है. ठीक है, सो ये जो आपका सोशल सेफ्टी नेट में आ रहा है, और आपका जो एसटीजीज भी जो है वो भी ऑफ कोर्स उसमें अच्छा नहीं मिस, मैं एक कंसेप्चुअल बात कर रहा था कि हम जब ये सोशल सेफ्टी नेट्स की बात करते हैं तो जैसे हम गवर्नमेंट ने पंजाब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2014 पास किया है, उसकी अगर आप बेस देखें तो ये है कि जो आप पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं किसी को स्किलफुल करने के लिए, वो भी दर हकीकत आप उसको एक सोशल सेफ्टी दे रहे हैं, सोशली एम्पावर कर रहे हैं. तो आपने जब ये बिस्प का और बाकी डाटा लिया तो मेरी जस्ट इसमें सबमिशन है, आप इस पे गौर कर सकते हैं. तो वो पैसा जो पब्लिक मनी आप स्पेंड करते हैं लोगों को स्किलफुल करने के लिए और खुसूसन डेस्टिट्यूट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के ऊपर कर रहे हैं, तो उसको भी अगर इसमें शामिल करें तो जरा ज्यादा बेहतर आपको नजर आ जाएगा. एक्चुअली अगर आप ये देखें ना, ये सोर्स है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्चुअली ये ग्राफ, ये टेबल मैंने प्लॉट नहीं किया हुआ, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एलोकेशन है पोर्टफोलियोज की, जिसमें वो एजुकेशन को और हेल्थ को सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं, और जो सोशल सिक्योरिटी है खासतौर पर सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हैं, और आपका एसटीजी पोर्टफोलियो जो कि ग्लोबल है उसकी एलोकेशन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं. तो वो ऑफ कोर्स वो पोर्टफोलियोज उन्होंने सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्रीट किए हुए हैं. लेकिन वो ठीक है, आपके जो बिस्प के फॉर एग्जांपल जो तालीमी वज़ाइफ हैं, जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपके सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही कवर हो रहे हैं.
ये जो कह रहे हैं ना, अगर उस तरह देखा जाए, जी जी, वो तो उन्होंने खुद कैटेगराइज कर दिया ना कि जिस वो तो कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ उन्होंने फाइनेंस का डाला डेटा है। है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अदरवाइज डेटा जो सब्सिडीज हैं वो भी सोशल प्रोटेक्शन में ही आती हैं कि वो लोग सब्सिडी अवेल कर रहे हैं, है। जी जी, तो वो भी सोशल प्रोटेक्शन की। इस तरह तो फिर जो है ना, वो सारा कुछ गवर्नमेंट जो कर रही है वो सोशल प्रोटेक्शन ही है। हेल्थ भी सोशल प्रोटेक्शन है, उसमें जो हमें रिबेट वगैरह मिलता है, जहाँ मुफ्त इलाज करवाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो लिहाजा मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये जो डायरेक्ट सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ना, उनको अलग किया, जो इनडायरेक्ट वाले हैं वो उन्होंने अलग रखे हैं। इन्होंने जो डायरेक्ट जो जो आपका फॉर एग्जांपल इस दफा का 250 अरब का जो पोर्टफोलियो है, वो उसके लिहाज से ये वो करें, आप वो फिगर्स भी देखें ना कि वो 250 अरब से ऊपर ज्यादा जा नहीं रही, ठीक है। तो अच्छा, अब ये अभी थोड़ा सा इस ग्राफ पे फोकस करें, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें अब ये देखें, ये बिस्प ने खुद सबमिट कराया हुआ है, बिस्प की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप ये देखें 2016 टू 2022 ये जा रहा है। टोटल एलोकेशन अगर आप देखें कि 102 अरब से स्टार्ट हुआ था और 250 अरब पे आज बिस्प की एलोकेशन है, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इतना है पोर्टफोलियो, और फॉरेन सोर्सेज जो आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्टर है उसकी इतनी कंट्रीब्यूशन है इन बिलियंस, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप देख लें, अच्छी खासी हैवी कंट्रीब्यूशन है, कहीं पे भी 81% से कम नहीं है, ठीक है। यानी कि वी आर मैनेजिंग मोर देन 81% वी आर मैनेजिंग ऑन आवर ओन। और बाकी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, एफसीडीओ, एडीबी जो आपको कर रहे हैं, वो ये एलोकेशंस हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की परसेंटेज है, और ये आपकी ना फॉरेन सोर्सेज की है, और ये टोटल मिल के इतनी एलोकेशन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि मिनिस्ट्रीज में एलोकेशन वर्सेस रिवाइज्ड जो होती हैं और वो रियल टाइम अलॉटेड होती है, उनमें भी डिस्क्रिपेंसी होती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी वो डिस्क्रिपेंसी भी नजर आएगी। अब ये देखिए कि सब्सिडीज में अनटारगेटेड सब्सिडीज ओरिजिनल और रिवाइज्ड में कितनी ये जा रही हैं एलोकेशन, और उसके बाद इनकी जो जीडीपी वैल्यू कितने अरब में आ रही है, ठीक है। तो ये ठीक ठाक इनकी जीडीपी वैल्यू आ रही है। अगर हमारी कितनी है, 376 बिलियन डॉलर्स की है, तो ये इट्स अ कंसिडरेबल चंक दैट वी हैव हियर, ठीक है। और इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ बेनिफिशरीज देखें, 5.34 मिलियन से स्टार्ट हुए थे, और अभी जो है तो ये 6 मिलियन पे हैं। और अब अगर आपको पता हो कि आईएमएफ का जो हमारा अभी जो एग्रीमेंट अभी है, उसमें कंडीशनैलिटी है कि 1.2 मिलियन पे लेके जाना है बिस बेनिफिशरीज का, ठीक है। इट्स वन ऑफ द कंडीशनैलिटी दैट वी हैव टू इंश्योर कि हमने 6 मिलियन से अभी एनएससीआर अपडेशन में मेरे ख्याल में 9 मिलियन तक आ गए हैं, एनीवन? हाँ, एग्जैक्टली 9.2 तक आ गए हैं, और अब आपने इसको 1 लेके जाना है, और दिस इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल आइटम ऑन दी आईएमएफ कंडीशनैलिटी लिस्ट, ठीक है। और इसी तरह ये देखें कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज भी आप देखें कि इंक्रीज हो रहे हैं। और नीचे अगर आप ये देखें तो नीचे वही है टोटल बजट एलोकेशन और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। और अगर आप ये देखें कि कितना बजट एग्जीक्यूट हुआ है, तो तकरीबन ये बजट फुल एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पे अगेन आपको कोविड का नजर आ रहा है कि 137% एग्जीक्यूशन थी, ठीक है। सो इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ आवर बजट, ठीक है। मेरे ख्याल में मुझे कोई पिछले दिनों दिस पे क्वार्टर में बता रहा था कि पाकिस्तान मिलिट्री के बाद सबसे बड़ा बजट दिस का है, ठीक है। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट जो है वो दिस का है, ठीक है। सो अगेन दिस इज अ वे टू रीड दिस, आपको इस तरह से पता चलेगा। लेकिन आप एक्सपेंसिंग आउट भी देखें कि जो भी अलॉट हो रहा है, जो भी एलोकेट हो रहा है, उसकी कंप्लीट उसकी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट बन रही है। और ये भी उसी तरह का ही एक कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस हैं। अगर आप इसमें देख लें, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका आप जिक्र कर रहे थे ना कि हेल्थ का और एजुकेशन का, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर को आप देखें, ये प्रोजेक्शन दी हुई है 2022 से 2026 की, कि 177 बिलियन से ये 208 बिलियन पे जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 22 अरब से 26 अरब तक जाएंगे, ये उसका पोर्शन है। न्यूट्रिशन इट्स मोर कम फिगर है, ठीक है। हालांकि चाइल्ड स्टंटिंग इज अ ह्यूज इशू, ठीक है। और ये आप देख लें कि इसमें ज़्यादा कोई चेंज भी नहीं है। स्कॉलरशिप का भी 10-11 अरब है, एनएससीआर का 4 अरब, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हैं, और अदर कंटीजेंसीज में जो कोविड के रखे हुए हैं ठीक ठाक ह्यूज पोर्शन रखा हुआ है कंटीजेंसीज में, ठीक है। सो ये इस तरह से ये फुल बजट हो रहा है। लेकिन इसमें मसला, द प्रॉब्लम इज दैट ये जो कॉस्ट या एक्सपेंडिचर indicators, they are not the best indicators for measuring performance, so we have to be very much careful about this। और ये जो पूरा सेगमेंट है ये आपकी पावर पॉइंट में कवर्ड है,
यहाँ पे हम सिर्फ ग्राफ्स ही डिस्कस करेंगे, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू टेक इट बिफोर क्लोजर. मैडम ये इंडिकेटर्स जो आपने कहा क्वांटिफाइबल बना तो हम सकते हैं, लेकिन इसमें थ्रेशहोल्ड हम कैसे रखते हैं? प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बेस पे प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हैं, या कोई इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारी है जिसको देख के हम थ्रेशहोल्ड रखते हैं? बिल्कुल, देखें जो कल आपको सारी इम्पैक्ट वैल्यूएशन टेक्निक्स बताई थी, उसमें ये था कि बिफोर गिविंग एन इंटरवेंशन यू एक्चुअली कंडक्ट अ बेसलाइन सर्वे. ठीक है, दैट वेयर डू दे स्टैंड. फॉर एग्जांपल आपने अगर ये हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देते हैं, तो इससे इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, इस इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले वी विल हैव अ बेसलाइन सर्वे ऑफ व्हाट इज द लेवल ऑफ द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, what is their risk mitigation or coping strategies when they face disaster, what are their spending habits, how much they are able to save. ठीक है, उसके बाद यू गिव दिस इंटरवेंशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड और वो कभी भी मतलब इस तरह नहीं होता कि 1 महीने की इंटरवेंशन दे दी, 2 महीने की दे दी. यू कम्प्लीटली गिव दैट इंटरवेंशन, यू कम्प्लीटली फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ इम्पैक्ट वैल्यूएशन. जिस तरह कल आपको डॉक्टर अनायत ने बताया कि कोई कंकरेंट इवेंट ना चल रहा हो, इसको हम इम्पैक्ट वैल्यूएशन में कंकरेंट इवेंट कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ आके कोई और इंटरवेंशन ना देनी शुरू कर जाए. So we have to make sure that whatever change will be happening over time, or whatever impact will be taking place over time, that is only because of our intervention and not some concurrent event that was taking place. ठीक है, or some pre-existing trend कि उस जगह पे जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, लेकिन मुझसे 6 महीने पहले एक एनजीओ माइक्रो फाइनेंस की आके बैठ के 4 महीने पहले माइक्रो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट कर गई हो, देन आई कैन नेवर से कि ये जो भी empowerment आई है ये मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की वजह से आई है, इसमें जरूर उसकी भी कंट्रीब्यूशन होगी जिसने माइक्रो फाइनेंस लॉन्च किया था. तो यू रेडिकेट ऑल दीज उसमें जो इंटरफेयर कर सकते हैं, और फिर यू गिव एन इंटरवेंशन, फिर आप उसका एंड लाइन लेते हैं, आप कंट्रोल ट्रीटमेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं जिनको कुछ भी नहीं दिया, जिनको ट्रीटमेंट दी, एंड देन यू गेट द इम्पैक्ट, और इसमें हर इंडिकेटर क्वान्टिफाइड होता है. तो आप वैसे एक बेसलाइन सर्वे कर लें और उसके बाद एंड लाइन कर लें या इंटरवेंशन बीच में डाल के वो कर लें. सो दिस इज एवरीथिंग इज पॉसिबल. So just in the interest of time, I will close right here because you have a next session. जी sir. जी 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 प्रोजेक्शन है 2022 से 2026 की. जी 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 ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपके बेनिफिशरीज भी बढ़ रहे हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं जो आपको कर रहे हैं. आप जब आप 1.2 मिलियन पे लेके जा रहे हैं 6 मिलियन से, तो आपका एलोकेशन भी इंक्रीज होंगी. ठीक है जी जी हाँ, यहाँ पे प्रोविंशियल तो नहीं दी हुई, तो कंसोलिडेटेड ग्राफ है, लेकिन डेफिनेटली ये इसके पास प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस भी होंगी. देखिए टोटल कंसोलिडेटेड है, तो आप प्रोविंशियल का अगर देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें जो आप करें. थैंक यू.